Hello, good morning students. In our last videos we discussed about the identifiers, character sets, variable name, variables and data types. So today we are going to discuss about the types of data, means data types. So here two data types are there. One is the primitive data type, second is the non-primitive data type. Primitive data types are the default data types. Default data type means that the size and range of the primitive data types are already defined in the language. So one is the data type, one is the primitive data type, second type is the non-primitive data type. In the primitive data type means default data types. So we can also say that when you declare a variable in Java, you must declare it with a specific data type. मीन्स जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल के फ्रंट पे हम एक डेटा टाइप असाइन करवाते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल int I small, int a equal to 20, int a equal to 20. So before declaring the variable means before declaring the a, firstly we assign a data type int, same as you want to store the second value. Like if you want to store the character value means a single character, then the data type is character d equal to single quotes. Within the single quotes we write here q and semicolon. Now it's clear. Means while you declare any variable, in the front of the variable firstly we assign firstly we type or firstly we write the data type according to the value. If our value is numeric, then we assign, then we apply the integer data type. Okay, so two types are there. One is the primitive, second is the non-primitive data type. In the primitive data types, total number of data types are 8. One is the boolean. Boolean means in the form of true or false. Second is the numeric. In the numeric, one is the non-numeric data type. Second is the numeric data type. Means non-numeric data type means characters. Okay, and numeric data type means integers. Numeric data type, under the numeric data type, one is the character data type. Character means char data type. Integer, in the integer, again integer data type, integral data type divided into two parts. One is the integer data type, second is the floating point data type. Means one is the without decimal and second is the with decimal. In the without decimal, again four data types are there: byte, short, int and long. In the decimal points, two data types are there. One is the float, second is the double data type. Now it's clear. Means in the data type, sub data types are, one is the primitive, second is the non-primitive. Under the primitive data type, 8 default data types are there. One is the byte, short, int, long, float, character, double and boolean. Byte, short, int, long, byte, short, int, long, these all are the numeric data types, means without decimal data types. And float and double both are the decimal data types. Character for the single character and boolean for the true and false. Now the second types of data type is the non-primitive data type. Under the non-primitive data type, number of types are there, means that all are the user defined data types. Data is the not default data type. Default data types are primitive data types and the user defined data types string, array, etc. ठीक है, class भी है. So I think on your book page number 390, all the data types are given with their size and with their range. Suppose that user just want to store a value and value is 20. So 20 just contains the 2 bits. To store the 20, we can also use here byte data type. Which data type? Byte data type. ठीक है,
बिकॉज 20 जो हमारा एक छोटी वैल्यू है, तो 20 को स्टोर करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ द बाइट डेटा टाइप. सेम एज you want to store the phone number of any person, you want to store the phone number of any person, then the range of phone number is more than the 20, so at that time we use the integer data type, int a equal to, like this. So if your number is under the integer data type, like in the if we discuss about the range of the data types, so byte range is -128 to 127, means हम बाइट के अंदर -128 नेगेटिव तक और पॉजिटिव में 127 तक डिजिट्स स्टोर करवा सकते हैं, मीन्स 127 तक स्टोर करवा सकते हैं. ओके, लाइक 127. ओके, so if you want to store the 191, then we use here short data type, short, as small, short data type. Clear? Short data type. अगर आपकी वैल्यू 32,767 से अबव है, इफ योर वैल्यू इज मोर देन 32,767 इन पॉजिटिव एंड 32,768 इन नेगेटिव, देन वी यूज द इंटीजर डेटा टाइप. अगर आपकी वैल्यू, देखो पूरा क्या है, डेट ऑल आर मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी, डेट ऑल इज द डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी. if you assign the integer data type to the small value, then it occupy the more memory. अगर आप एक छोटी वैल्यू को ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करवा दोगे, मीन्स एक आपने 2 स्टोर करवाना है सिर्फ, तो आपने उसको 2 को स्टोर करवा दिया इंटीजर में. अब इंटीजर कितनी ऑक्यूपाई करेगा, इंटीजर ऑक्यूपाई 32 बिट्स फ्रॉम द मेमोरी, मीन्स 4 बाइट्स फ्रॉम द मेमोरी, बट वी स्टोर हेयर a single digit. So to save the memory we use the small data type. लाइक अगर आपने 2 ही स्टोर करवाना है तो आपने 32 बिट्स क्यों ऑक्यूपाई करनी है, देन वी यूज द बाइट डेटा टाइप, मीन्स बाइट डेटा टाइप जस्ट ऑक्यूपाई 1 बाइट, मीन्स 8 बिट्स. सेम एज अगर आपकी थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, अंडर द 32,067 है, देन वी यूज शॉर्ट डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप, योर रेंज इज 21, 47, 48, 36, 47. Okay, same as long data type occupy the 8 bytes, means 64 bits. Integer data type occupy 32 bits. Short data type occupies 16 bits and byte 8 bits, means byte 8, short 16, int 32 and long 64 bits. Now it depends on your value, what type of value you want to store. आप कैसी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो. अगर आपकी वैल्यू बड़ी है देन वी यूज़ डेटा टाइप अकॉर्डिंगली. अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो आप डेटा टाइप बड़ी चूज़ कर लोगे, अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो आप डेटा टाइप छोटी कर लोगे. क्यों चूज़ करेंगे हम छोटी और बड़ी, जस्ट टू सेव आवर मेमोरी, जस्ट टू सेव आवर मेमोरी. अगर आपने सिर्फ स्टोर करवाना है 27, द 20 स्टोर करवाने मीन्स 2 डिजिट स्टोर करवाने, देन वाई वी यूज़ द 32 बिट्स. असी इंटीजर क्यों यूज़ करेंगे, हम इंटीजर क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है. सेम नेक्स्ट इज द फ्लोटिंग डेटा टाइप. सो फ्लोटिंग डेटा टाइप, अंडर द फ्लोटिंग डेटा टाइप, one is the float, second is the double, both are used for the decimal values. In the floating data type, if your value is smallest, then we use the float data type. अगर आपकी वैल्यू बड़ी है then we use the डबल डेटा टाइप. अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो कैरेक्टर, देन वी चूज द कैर डेटा टाइप, कैर इक्वल टू सिंगल कोट्स, लाइक ओके. ट्रू फॉल्स, फॉर द ट्रू फॉल्स वी यूज द बुलियन डेटा टाइप. एंड नेक्स्ट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. इन द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, string is the user defined data type. Now user can add any number of characters in the string. अगर हो सकता है यूज़र ने सिर्फ सेव करवाना हो मंडे, MONDAY, ठीक है, ओनली फ्यू करेक्टर्स है मंडे के अंदर. मे बी यूज़र वांट टू स्टोर द नंबर ऑफ करेक्टर्स, मीन्स यूज़र वांट टू स्टोर अ बिग सेंटेंस, देन वी चूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप. क्लियर.
So you must read the chapter from page number 390 and 391. So on next page 392 we already discussed initializing a variable means how to assign the value to the variable, data type, variable name equal to initialize. Now discuss a little example, a short example of the code. Here I am using NetBeans IDE 7.2 software to execute the programs. So first of all, if you also want to install the software into your computer, then first of all download the JDK. First of all install the JDK into your computer. After that you can download the next software NetBeans or BlueJ. ठीक है, अगर आपने ये इंस्टॉल करना है, फर्स्टली डाउनलोड द सॉफ्टवेयर JDK फ्रॉम द इंटरनेट. After that and download and install the JDK into your system, and after that install the NetBeans or BlueJ. You can use any one from both. Now I'm using here NetBeans. So in the example, first of all we declare here a class. Public means access specified. Second is the class and name of the class. To declare the class, syntax is keyword class and class name. ठीक है, अगर आपने क्लास डिक्लेयर करनी है, देन फर्स्टली हैव टू राइट द कीवर्ड क्लास, आफ्टर दैट नेम ऑफ द क्लास. सेम एज I'm written here, class name of the class is class 9. Means now while you write the name of the class, at that time follow the rules of identifiers. Okay, next is our main method. This one is our main method, public static void main string arguments. We will discuss about it further, ठीक है, in the next chapters. Next हम declare here two variables. One is the a variable, second is the b variable. Int means data type. Int a equal to 10 or byte b equal to 20. Byte b equal to 20 means simply assign the two values to the two variables with different data type, or same with you can also use the same data type. Next, third variable int c equal to a plus b means again we declare the third variable with their data type and apply here some processing, means apply here some expression. One expression is there, means a plus b. Now it calculate or it evaluate or it process the a plus b means 10 plus 20 equal to 30 and assign the result to the c variable. Here is a statement system.out.print to print the value of c. Now execute the program from the run menu, run and run part. So our result is 30. Clear? In the program, firstly we declare a class, start the curly braces, write the main method. Okay, again start the curly braces, int a equal to means declare first variable, declare the second variable and apply the processing, means apply the plus operator onto the both variables a plus b and assign the result into the c variable. And in this statement we print the value of c. So this one is a small example how to declare, how to find the sum of two numbers. Okay, we use here different data types. You can also use the same data type like int or byte. It depends on you. So I think it's clear to you.
थैंक यू बेटा।